last unit of my greatest Olympic prize. We have already completed unit 1 and unit 2, and tomorrow is our exam. For your kind information, those students who have not joined channel, the telegram group, please join the channel. Tomorrow at 3 p.m. your exam question will be there, passage will be there, 10 marks question, and you have to send the answer by my WhatsApp. Okay, number will be provided in the telegram group. So let's start the unit. It is exactly. Good evening, beta, lovely. So the third unit. आज हम पढ़िबा तृतीय यूनिट. तृतीय यूनिट कौन अछि बोले? That night I walked over to Lord Long's room in the Olympic Village to thank him. As we know, जेमते हम समस्त जानिचे, जदि से दिन लॉर्ड लॉन्ग तांको हेल्प करि न थांते, ये बाबा क्वालिफाई करि पारि न थांते. He mustn't have been qualified. से क्वालिफाई करि पारि न थांते. तो सेही दिन रातिरे एक्जाक्टली से कौन कले? That night I walked over, I means Jesse Owens walked over to Lord Long's room in the Olympic Village to thank him. So here there is a question, why did he walk over to Lord Long's room? कहीं किसे गले? To thank him, तांको धन्यवाद दवा पाए, because he knew to qualify for the finals. So I knew, I knew if he had not been for him, I probably would not be jumping in the finals the following day. जदि से दिन मु जानी जदि से दिन से मते हेल्प करि न थांते, ताहेले मु फाइनल रे खेलु न थांते नहीं. So we sat in his quarters and talked for 2 hours. We sat, आमे बसिलु कोठी तांको क्वार्टर रे, से जो ओलंपिक विलेज रे थिबा लॉर्ड लॉन्गर क्वार्टर, से क्वार्टर रे we sat in the quarters, in his quarters, and talked for 2 hours. And we talked for 2 hours. 2 घंटा काल आमे कथा हेलु. किए कथा हेले? लॉर्ड लॉन्ग एंड जेसी ओवेन्स 2 घंटा काल कथा हेले. अच्छा, प्रश्न उठे कौन 2 घंटा काल कौन कथा हेले? नहीं, 2 घंटा काल से कौन कथा हेले? 2 hours about track and field. About what? About track. What did they talk then? The question is, what did they talk for 2 hours? About track and field. About track and field. Then ourselves. Here ourselves means what? About his family and my family. मोर परिवार तुम परिवार किए जमी बंधु 2 जन बसी गले, बाबू घरे समस्ते भल अच्छा तो बापा माँ देह भल अच्छी, पुओ भल अच्छी, ए भाया कथा चले. तो दे टॉक्ड अबाउट देयर सेल्फ, से माने निज विषय भी कथा हेले. देन वर्ल्ड सिचुएशन. हियर वर्ल्ड सिचुएशन को केमती डिस्क्राइब करवा? द पॉलिटिकल सिचुएशन, राजनैतिक घड़ी संधि मुहूर्त, राजनैतिक अवस्था, पृथ्वी रे घटुवा राजनैतिक पट परिवर्तन, अवश्यम्भावी युद्ध, एभलिया किसी अवस्था विषय भी से कथा हेले. वर्ल्ड सिचुएशन एंड डजन ऑफ अदर थिंग्स. फ्रेंड्स कहले पूरा माने गुली खटी कहले तुम जानिच कौटी से कथा आरंभ, पाठ पढ़ार आरंभ होगी सिनेमा हॉल रे कथा सरे, आम समस्त जानिचे. So and dozen of other things, बहुत सारा कथा से माने हेइचंती. So when I finally got up to leave, and it's time to leave, वर्तमान विदायर समय आसिला. When I finally got up to leave, मुझे तो बल उठिली कौन करिवा पे बिले, मुझे तो बल से जगह छाड़ीवा पे उठिली. जत बल got up to leave, what happens exactly? We both knew, आमे 2 जन को हमको माने सेतबले अनुभव होतला ना. We both knew that a real friendship had been formed. A real friendship had been formed. जे 2 जन के भितरे एक माने प्रकृत बंधुता, ट्रू फ्रेंडशिप पिले मु फर्स्ट ईयर आज टू माय ट्रू फ्रेंड उपरे जो माने पढ़ीच, जदि न पढ़ीच क्लासटा देख. आज 8:15 रे क्लास अच्छे, प्रीमियर क्लास. तो तुम देख एक्चुअली ट्रू फ्रेंड किए, ट्रू फ्रेंड कहले कौन? सो फ्रेंडशिप हैड बीन फॉर्म्ड, गोटे माने प्रकृत बंधुता, कृष्ण सुदामा भलिया बंधुता गोटे आम भितर माने फ्रेम होइतिला, फॉर्म होइतिला. हैं सो फॉर्म्ड. लॉर्ड वुड go out to the field the next day trying to beat me if he could. Lodge
Lodge would go out to the field the next day. तो बर्तमान से कहते सिचुएशन एभली थिला लॉज वुड गो आउट टू द फील्ड द नेक्स्ट डे आसंता काली माने फाइनल दिन लॉज पड़िया को जीवे कौन पाई नेक्स्ट डे ट्राइंग टू बीट मी इफ ही कुड trying to beat me if he could and in that field he will try his level best to defeat me मते हरेवा पाई से संपूर्ण प्रयास करिवे से मत संपूर्ण प्रयास यस बेटा पढ़िबा टिकी पढ़िबा ग्रामर भी पढ़िबा बेटा ग्रामर भी पढ़िबा सब पूरा कोर्स कंप्लीट हबो डोंट वरी सो यस बीट मी इफ ही कुड बट आई न्यू किंतु मु जानी बट आई न्यू दैट ही वांटेड मी टू डू माय बेस्ट ही वांटेड मी टू डू माय बेस्ट से चाहूले मु भी मोर बेस्ट देवी से भी तांकर बेस्ट देवे तापर जी भल दब भल कर सी ही जीतब दिस इज कॉल्ड ट्रू फ्रेंडशिप ना कि माने हॉस्टेल रूम रे आम समस्त रोचे कि रूम रे रोचे आउ जड़े मो साथ पढ़ुची मुझे कौन करी मुझ शोई पड़ार एक्टिंग करी तापर सी शोई पड़ा पर मुझे उठिक पढ़ी दिस इज नॉट ट्रू फ्रेंडशिप या ट्रू फ्रेंडशिप कह ना श्योर 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 बेटा सोनाली सो even if that meant my winning and wanted me to do my best even if that meant my winning जदि मु मोर बेस्ट दे के जीती गले भी तांको फरक पड़ो नथिला से चाहूले जे तमे तमरो बेस्ट दियो मु मोर बेस्ट देबी जे सबुठार भल प्रदर्शन करिवो सीए जीतिबो दिस इज कॉल्ड sportsman spirit isn't it this is called sportsman spirit so winning as it turned out यार फल स्वरूप दुई जन माने स्ट्रॉन्ग कंपिटिटर अच्छे जिते दुई जन स्ट्रॉन्ग कंपिटिटर हो जाते से जेकोसी जिनस मजा आसी जाए कंपिटिशन टफ हो जाए हार्ड हो जाए सो एज इट टर्न्ड आउट एज ए रिजल्ट ऑफ दैट as a result फलस्वरूप as it turned out consequently भी आम कहीपर यार अर्थ एटा इट्स ए प्रेज as it turned out Lodge broke his own past record in doing so Lodge broke his own past record Lodge long कौन कले तांकर अतीतर रेकर्ड भांगी नुआ रेकर्ड करदेले से जिते जंप करने कहगला ही हार्ड ब्रोकन हिज रेकर्ड से भांगीदेले रेकर्ड ही ब्रोक हिज रेकर्ड and own past record in doing so in doing so he pushed me onto a peak performance and he pushed me by doing that by breaking his own record he pushed me से मते बाध्य कले ठेलिले कहले कोन से मते ठेल देले कि ना से मते बाध्य कले मोर बेस्ट दबा पई because he had given already his best कारण से तांकर बेस्ट दे सारी से तांकर पास्ट रेकर्ड भांगी सारी बर्तमान मोर पाली थिला माने मते भी से कहउतले कि तमे भी तुमर बेस्ट दियो सो ही पुश्ड मी टू पिक परफॉर्मेंस कहले टॉप परफॉर्मेंस आई रिमेंबर दैट एट द इंस्टेंट आई रिमेंबर मन मने अछि एट द इंस्टेंट कहले एट द मोमेंट जो समय रे एट द इंस्टेंट I landed from my final jump. मुझे तो मोर फाइनल जंपटा डेली फाइनल जंपटा जिते मुझे डेली landed from my final jump, the one which set the Olympic record of 26 feet 5.4 inch. And what is it exactly? 26 feet 5.1 by 4 inch. This was the record being made by Jesse Owens. 26.5.4 inch. This was Olympic record. So the one which set the Olympic record of 26 feet 5.4 inches, he was at my side. And he was at my side. Who was at his side? Lodge Long was at his side. Lodge Long से समय तांको पाखरे ठिया आइथिले जेतेबेले ये जितुथिले से हारुथिले ये फर्स्ट पोजीशन को जाउथिले से सेकंड पोजीशन को जाउथिले सेही समय रे exactly he was beside Jesse Owens. Lodge Long was beside Jesse Owens. Lodge Long Jesse Owens को beside रे थिले. So I landed from my final jump, the one which set the Olympic record of 26.5.4 inches. He was at my side, congratulating me. And what he was doing? He was not at all upset. आमे हेतिले कोन हेइतांते आमे जेहेतु सेकंड हे गले आमे हारि गले आमे अपसेट हेइतांते
नहीं आमर मन दुख होता बट ही वाज नॉट एट ऑल अपसेट दिस इज कॉल्ड ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट खेलुआड़ मनोभाव बोली जहाँ को कह ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट माने विनिंग को आम जमी ग्रहण करवा लॉस को भी सेमती ग्रहण करवा दिस इज कॉल्ड ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से भाया एजुकेशन स्पिरिट पास को जमी ग्रहण करवा फेल को भी सेमती ग्रहण करवा बिकॉज जहाँ जमी कर्म सेमती फल ही आम पाइबा पिले सो आई रिमेंबर and congratulating me despite यह सत्वे despite कहले सत्वे यह सत्वे कौन थिला despite Hitler glared at us from the stands not 100 yards away. Hitler's glared 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 कहले कौन पिले GLARED glared कहले stared angrily yes so despite Hitler what he was doing Hitler glared at us from the stands not 100 yards away Hitler मात्र 100 मीटर भी होबनी 100 मीटर डिस्टेंस रे हिटलर अछंती हिटलर एमानकु रागिगिरी कटमट करी चाहिचंते कारण तांको देशर पिला हारि जाईची आ ये जने अमेरिकन निग्रो जीति चंते तथापि आउ से हिटलर थिले हिटलर कहले डिक्टेटर थिले एक छत्रवादी शासक जहाँ चाहिए सेटा हम या मार दियो कहले मार देबे बट स्टिल ही वाज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग लॉजलॉन्ग वाज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग ही वाज नॉट एट ऑल एनी प्रेशर ही हैड नो प्रेशर एट ऑल गेटिंग मी सो he glared at us from the stands not 100 yards away lodge took my hand hard lodge means lodge long shook my hand shook second हाथ माने हैंडसेक करवा सो सुक माई हैंड हार्ड एंड दैट यू नो से मो सहित माने हैंडसेक करूले फार्मली हैंडसेक करूले इट वाज अ प्योर हैंडसेक हार्ड एंड इट वाज नॉट अ फेक स्माइल विथ अ ब्रोकन हार्ट और अ सॉर्ट ऑफ ग्रीफ इधर एंड ही वाज वेयरिंग अ स्माइल तांको मुहरे गोटे हस थिला स्मित हस थिला एंड दैट वाज नॉट एट ऑल अ फेक स्माइल तांकर जो मुहेरे हस थिला से मो सहित हाथ मिलला बेले जो हसुले सेटा फेक स्माइल नथिला जेमती तुम देखिथिबो माने दी जन भितर पाटितुंड होईछि जतबेले सार आसीबे कहबे अरे मिसी जाओ दी जन सेतबेले दी जन हसी दियो हम पाखे गोटे फेक स्माइल एभले गोटे हसीबा जोटा फेक स्माइल जना पड़ जाए माने तुमर इच्छा नहीं तुम जबरदस्ती हसुच बट से भली हस नथिला इट वाज नॉट एट ऑल अ फेक स्माइल ऑन द फेस ऑफ लॉजलॉन्ग बिकॉज ही हैड लॉस्ट द मैच नॉट अ फेक स्माइल विथ अ ब्रोकन हार्ट कहले बुझुथिबा में भंगा हृदय माने हारी जाइथिबार जो मन दुख थिबा कथा से मन दुखटा नथिला सो एंड इट वाज नॉट अ फेक स्माइल विथ अ ब्रोकन हार्ट sort of grief either you could melt down all the gold medals and cups I have and they would not be operating on the 24 carat principle I felt for long at that moment से समय मोर मन में आसूला पिले एग्जाम विषय में शेष में कहि क्लास यूनिट सरीगला एग्जाम परीक्षा विषय कहि काली परीक्षा अच्छी तुम सो यू कुड मेल्ट डाउन ऑल द गोल्ड मेडल्स एंड कप्स आई हैव जदि यू कुड मेल्ट डाउन कहले तरलैबा मिसेइबा सो यू कुड मेल्ट डाउन ऑल द गोल्ड मेडल्स मुझे मो पाखे जेतक स्वर्ण मेडल्स अच्छी स्वर्ण उपहार अच्छी गोल्ड मेडल्स एंड कप्स जी गोल्ड मेडल्स कप मो पाखे अच्छी जदि सबको तरलैकी मु गोटे गोल्ड माने सुना बाहर करी प्यूरीफाई कलापर भल सुना बाहर आम समस्त जानिए प्यूरीफाई कलापर जो सुना बाहर एंड दे वुड नॉट बी ए प्लेटिंग एंड द 24 कैरेट फ्रेंडशिप आई फेल्ट फॉर लॉज लॉन्ग एट दैट मोमेंट से समय लॉज लॉन्ग का प्रति मो मनरे जो धारणा थिला मो मनरे जो बंधुत्व भावना सृष्टि होता से बंधुत्व भावना एपली शुद्ध थिला जे 24 कैरेट सुना ठारू भी बड़ी थिला आउ से मो पाखे जेतिकी माने स्वर्णर उपहार थिला से सबको जदि मु मेल्ट डाउन करदेवी तरलई देवी ता ऊपर तार शुद्धता से समान हब नाही सो एंड इट वाज नॉट ओके हैव so yeah I felt for long at that moment I realized then सेही समय मते अनुभव हैला I realized then सेही समय मते अनुभव हैला कोन अनुभव हैला पिले yes
So that lodge was the epitome of what Pharaoh the Cubitan, founder of modern Olympic Games, must have had in mind when he said. So I realized at that time say Shamar mu anubhav kali that lodge long was the epitome, EPITOME, EPITOME. Epitome means example, udaharana, example. So Lazlong was the epitome of what Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin was the founder of modern Olympic Games. Pierre de Coubertin was the founder of modern Olympic Games. आधुनिक Olympic Games रो Olympic खेलर प्रतिष्ठाता होचंती Pierre de Coubertin. So epitome of what Pierre de Coubertin, founder of the modern Olympic Games, must have had in mind when he said, must have had in his mind when he told. ମାନେ ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଏଇ ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆସିଥିବ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ପିଲେ what did Pierre de Coubertin said? Pierre de Coubertin କ'ଣ କହିଥିଲେ? The important thing in the Olympic Games is not winning but taking part. The important thing in the Olympic Games is not winning but taking part. Olympic Games रे ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ? ଭାଗ ନେବାଟା, ଜିତିବାଟା ନୁହଁ. The important thing in Olympic Games is not winning but taking part. ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲେ? It was being told by Pierre de Coubertin. କାହା ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଥିଲା? Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin କିଏ? He was the founder of modern Olympic Games. ଆଉ କ'ଣ କହିଥିଲେ ସେ ପିଲେ? The important, yes, the essential thing in life. এটা ଥିଲା Olympic Games ର important ଜିନିଷ. Olympic Games, what is important in Olympic Games? It's not winning but participating. Now, what is important in life? ଜୀବନରେ important କ'ଣ? ଜୀବନରେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ପିଲେ? So, what is, the essential thing in life is not conquering but fighting well. ଜୀବନର ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଜିତିବା ନୁହଁ, କ'ଣ? but fighting well. ଭଲସେ ଲଢ଼େଇ କରିବା, ସଂଘର୍ଷ କରିବା. So what is important in life? To struggle, to fight. ଯାହା ବି whatever circumstances will be there, we are to fight against those circumstances. This is what the value of life. This is the importance of life. Life is not meant for only conquering, only winning. Life had lots of struggle, and we have to face those struggle. And life has lots of challenge. We have to accept those challenge. Say challenge गुड़ी को हमको accept करिवा को पड़िबा पिले. So this is all. ठीक है, question answer विषय रे कथा हिजबा पिले. प्रश्न उत्तर डिस्कशन करि दवा सब तक. फर्स्ट यूनिट रु मु नउची सब तक प्रश्न उत्तर. So first number is, why were nationalistic feelings running high during the 1936 Summer Olympic Games in Berlin? ମୁଁ ଖାଲି keyword କହୁଛେ ପିଲେ, ଖାଲି keyword କହୁଛେ. I am telling the keywords, you have to write the answer. प्रथम जिनिष ହେଲା ଏଠି, because of the childish remark of Adolf Hitler. Because the childish remark of Adolf Hitler, ଏଟା ହେଉଛି ତାର keyword. Second question होची, I was not too worried about all this. What does this refers to? This refers to Hitler's remark. मने रखिबा, Hitler's belief or winning the Hitler's belief. Next, question number 3. Why was not Owens worried? Because he had trained, sweated and disciplined himself for the last 6 years, keeping the games in mind. एटा होची, this is the key sentence and keyword केवल कहूछ मु. Question number 4. Why did everyone expect Owens to win the long jump easily? काहीकि समस्ते माने एभलिया कहूतले. Why did everyone expect Owens to win the long jump easily? तो एठी आंसर कोन हबा पिले? आंसर होउची because he had won the world record as a university student. Question number 6. What did he learn from people about lodge long?
लॉज लॉन्ग ठू से माने से कौन शुणिले कौन जानिले he came to know that he had been kept under wraps by Adolf Hitler जे ताकू secretly Adolf Hitler रखिथिला. Question number 7. Do you think Nazis Aryan superiority theory meant that Germans were superior to Negroes? Yes. How did Owens feel about it? A little hurt under the color. Question number 8. What made Owens determined to beat Lord Long? कहीं किसे जितवा पाई चाहिए? Because if Lord Long would win the match, it would add some support to Nazis Aryan superiority theory. That's why he had concentrated to win the long jump. Unit number 2, do number unit. What does a coach say about an angry athlete? An angry athlete is an athlete who makes mistake. This is the key sentence. Question number 2. What were the results of the first 2 qualifying jumps for Owens? What were the results of the first 2 qualifying jumps for Owens? The result was bad. He did not qualify. He did not qualify in the first 2 qualifying jumps, or it was no jump. Question number 3. Why did Owens kick the pit? Owens kicked the pit disgustedly. Question number 4. Who offered Owens a farm handshake? Lord Long. Was he friendly or hostile? He was friendly. Question number 5. Why did Long speak to Owens during the trials? Did he mean to make friendship with Owens or to find out what was troubling him? He wanted to make friendship with Owens and also wanted to know what was troubling him. Question number 6. He really looked the part. What does this means? This means exactly that he really looked like an Aryan. Then Aryan, or he looked as if he belonged to a superior. He looked as if he belonged to a superior race. The answer is already there, guys. Question number 7. How did Lord Long help Jesse Owens in qualifying for the final jumps? Lord Long told Jesse Owens to draw a line, pull it behind the checkerboard and jump from there. By this he would not make mistake at least, and by doing that he qualified. Question number 8. Tomorrow is what counts. What did Long mean by this? Means tomorrow is final. Question number 9. Did Owens qualify for the final jump? Yes, Owens qualified for the final jumps. How did he do that? By obeying the advice of Lord Long, he drew a line, pull it behind the checkerboard and jump from there, and he easily qualified by a foot to spare. बर्तमान जी आम लास्ट यूनिट क्वेश्चन आंसर. लास्ट यूनिट 4टा प्रश्न अच्छी. When did Owens and Long realize that they had become friends? While Lord Long wanted to leave from the room of the quarter of Lord Long, Jesse Owens wanted to leave the quarter, or going to leave from whom? From exactly the quarter of Lord Long. At that time they both realized that there was a true friendship. Question number 2. Who was Coubertin? What was his ideal? Coubertin was the founder of modern Olympic Games. And according to him, the important thing in Olympic is not winning but participating, and the important thing of life is struggling well or fighting well, not conquering. Question number 3. Why has Long been called a fine example of Coubertin's ideal? Lord Long been called a fine example of Coubertin's ideal because instead of his nation, he was playing for German. He is playing for his country. Still, he was not taking it seriously, and he helped his opponents in clearing his qualifying rounds. And from this, it is very clear that he was an epitome of pure sportsmanship. Question number 4. What do you think was the greatest Olympic prize for Jesse Owens? The friendship of Lord Long. The friendship of Lord Long. Pile etikki thila question answer. Asanta kali exam ଅଛି. Asanta kali ପରୀକ୍ଷା 3ଟା ବେଳେ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି.
आ 3टा बेले परीक्षा रे तुमको टेलीग्राम ग्रुप रे मेसेज करा जीवो, टेलीग्राम ग्रुप रे क्वेश्चन पठा जीवो, आउ तुमको आंसर व्हाट्सएप रे पठेइबो। तुम टेलीग्राम ग्रुप रे मु पठेबी तुमको माने गोटे पैसेज दिया जीवो। फर्स्ट इनिशियल स्टेज रे गोटे पैसेज रो आंसर 2 रु 3 वाक्य रे हमको आंसर लिखिकी पठेबार अछि, क्वेश्चन विथ आंसर। ठीक अच्छे, पैसेज विथ क्वेश्चन मु पठेबी। व्हाट इज द पैटर्न अनुसार परीक्षा हम, आउ तार रिजल्ट आसंता काली ही डिक्लेरेशन हम। 3टा बेले परीक्षा 3:45 भितर तुमको आंसर सब सेंड करिवार अछि व्हाट्सएप रे। मन रखिबा टेलीग्राम रे सेंड करिबा नहीं, एंड योर रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड इन द लाइव क्लास टुमारो, दो देयर विल बी नो क्लासेस, स्टिल आई एम ट्राइंग टू टेक ग्रामर क्लास टुमारो। संडे ग्रामर क्लास करिबा, बेसिक फंडामेंटल ग्रामर क्लासेस हम। ओके, सी यू देयर, स्टे ट्यून्ड, मास्टर ऑफ इंग्लिश।